अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नईम खियानी फ्रॉम द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। थैंक यू सो वेरी मच सारे प्रोग्राम्स को पसंद करने का। इस वक्त हालात बिल्कुल डिफरेंट चल रहे हैं। जो हमारे लास्ट वीक की डिस्कशन थी उससे कम्प्लीटली डिफरेंट इस वीक हुआ है। कुछ निगोसिएशन की तरफ कहानी जा रही थी और जो है अगर आपने न्यूज़ अगर आप जो है फॉलो कर रहे हो तो इस वक्त 2 वीक के लिए देयर इज़ अ बैन राइट नाउ, सो देयर इज़ नो फाइट फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स। तो कोई झगड़ा नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उससे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या असर पड़ रहा है, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। ऑयल की प्राइस में चेंज आया है, गोल्ड की प्राइस में चेंज आया है और ओवरऑल इकोनॉमी जो है वो थोड़ी सी इस वक्त नजर आ रही है कि कुछ कहीं जा रही है इस वक्त। सो लेट्स स्टार्ट आवर प्रोग्राम टू डिस्कस दैट फर्दर। पहले हम डिस्कस करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के हुआ क्या लास्ट 2 वीक और 3 वीक से, अब मार्केट कहां जा रही है। हमारी मार्केट पहले रिलीफ रैली में थी, पहले देख रहे थे इन्वेस्टर्स जो है वो ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे उस वक्त। दे वर लुकिंग इनटू दैट, मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर वर जस्ट वाचिंग कि किस तरफ जो है वो पलड़ा जा रहा है, क्योंकि एक पॉइंट पे एनर्जी सेक्टर वाज ग्रोइंग, ऑन द अदर साइड ऑयल सेक्टर वाज ग्रोइंग, ऑन द थर्ड साइड गोल्ड की मार्केट जो है वो ड्रॉप हो रही थी और यूएस का डॉलर जो है वो स्ट्रांग हो रहा था। तो देयर आर लॉट ऑफ स्पेकुलेशन was going on, so which is why a lot of investors were just waiting to see where would this be landing. और now अब जो है वो कुछ हालात नजर आ रहे हैं, the things how things are going. So next reality check, and that's exactly what I was referring to, कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो the best time for the investor is to just look into it कि either jump in से बेहतर है कि आप जो है थोड़ा सा एनालाइज कर लो, and then you'll get your reality check के होने क्या वाला है, and then it moves to a next level. Then market is now into the stabilization mode, and that's what we are seeing for this week. Early week क्या हुआ, extreme volatility continues, क्योंकि कुछ पता नहीं चल रहा था क्या हुआ था। एक डेडलाइन आ गई थी April 8th की, लेकिन उस पे क्या होना था nobody knew about it. Massive rally on ceasefire news, and that's exactly what happened. एक जो है वो स्टॉक मार्केट के जो पॉइंट्स बढ़ने शुरू हुए, नॉट ओनली इन यूएस एंड कनाडा लेकिन पाकिस्तान में भी, क्योंकि पाकिस्तान प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस होल सिचुएशन। और लास्ट वीक को अगर आप देखें तो स्टेबलाइजेशन विद कंटिन्यूअस ऑप्टिमिज्म, एंड दैट्स एग्जैक्टली जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था। इस वक्त इस वीक को अगर ओवरऑल इन जनरल देखें तो शिफ्ट फ्रॉम पैनिक ड्रिवन मार्केट टू हेडलाइन ड्रिवन रिकवरी, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट जो है हमने पूरे हफ्ते इस तरह की मार्केट को देखा। तो हुआ क्या, S&P 500 0.8% ऊपर गई, hovering nearly 6,600 which remains the engine. Nasdaq plus 1.2% गई ऊपर, led by recovery in the Magnificent 7। और ये Magnificent 7 के बारे में हम बहुत ज्यादा बात कर चुके हैं कि जो टॉप 7 कंपनीज हैं, Amazon, Google, Meta, जो जिनकी Nvidia, जिनकी जो है $1 ट्रिलियन जो है और $1 बिलियन वैल्यू है, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट द मैग्निफिसेंट 7 कम्स इन। TSX कंपोजिट को क्या हुआ, प्लस 0.4% इंक्रीज रहा, और दैट्स अ मिक्स परफॉर्मेंस क्योंकि गोल्ड में भी गेन आया, कूलिंग एनर्जी सेक्टर में कूल डाउन हुआ, एंड विच इज व्हाई वी हैव सीन दैट, क्योंकि लास्ट वीक हमने देखा था कि एनर्जी सेक्टर वाज बूमिंग, बट दिस वीक एनर्जी सेक्टर वाज कूलिंग डाउन ड्यू टू द सीजफायर सिचुएशन। क्रूड ऑयल नीचे गया, राइट, तो स्टेबलाइजिंग अराउंड 110 बैरल एज सप्लाई फियर्स ईज। तो अब हम इस हफ्ते देखेंगे जो गैस प्राइस है उसमें थोड़ी सी चेंज आना शुरू हो जाएगा। ओके, यूएस स्टॉक मार्केट दिस वीक क्या रहा, ड्राइवर 1 सीज फायर की वजह से, विच इज द बिगेस्ट फैक्टर। टेम्परेरी जो यूएस ईरान सीज फायर एग्रीमेंट हुआ, ऑयल ड्रॉप शार्पली 13% ऑयल की गिरावट हुई, इन्फ्लेशन फियर्स ईज, हमें ऐसा लग रहा था कि इन्फ्लेशन जो है वो would go to the roof, but that eased out. Risk appetite surge, which means कि risk appetite जो लोगों में जो risk लेने की जो ताकत है वो देखने में आई, और ये जब ट्रिगर किया massive short covering and risk on rally. That's exactly what happened. Driver number 2 क्या हुआ, oil and inflation still are risk. Oil still structurally elevated, और हमने देखा वहां पे कि structurally जो है वो oil change हो रहा था। पर्सनल कंजम्पशन इन्फ्लेशन जो है वो 2.8% तक पहुंच गई थी, और मार्केट कंसर्न ये था कि इवन इफ वॉर पॉज इन्फ्लेशन डैमेज इज ऑलरेडी डन। सो इन्फ्लेशन को तो डैमेज हो चुका है, अगर वॉर रुक भी गई तो इन्फ्लेशन को तो आप वापस जो है लाने में अभी भी आपको 6 महीने लगेंगे, क्योंकि डैमेज ऑलरेडी हो चुका है।
सो उसके लिए जो है वो कंट्रीज क्या काम करी है, दैट्स व्हाट यू गोना सी. Driver number 3, policy and Fed uncertainty, and that's exactly what we were discussing last week. कि जो rates hike and cuts की वजह से जो हमारा next move होगा वो बहुत या तो easy होगा या मुश्किल होने वाला है, लेकिन उसमें जो market की जो direction है वो ज़्यादा clear नहीं थी और trading remains reactive. और इसकी वजह से जो है वो market की direction ज़्यादा clear नहीं थी, तो traders जो है वो रिएक्टिव मोड में चले गए कि जब मार्केट की कोई सिचुएशन हमारे पास आ गई देन विल सी कि हमें बाय करना है कि नहीं. अच्छा जी, बिग मूवर्स क्या रहे इस वीक के? इंटेल कॉर्प, राइट, शेयर्स जंप्ड ओवर, अ कंपनी अनाउंस इट वुड परचेज अपोलो. 14 बिलियन का स्टेक जो है अपोलो का ले रहे हो, और विच इज एन आयरिश चिप प्लांट, और जिसकी वजह से इंटेल कॉर्पोरेशन जो है वो ऊपर गई. अल्कोआ एल्युमिनियम सर्ज 22% दिस वीक. Recent strikes on Middle Eastern infrastructure sent aluminum price to 4 years high. यहाँ पे उनको सर्ज हुआ. यहाँ पे Micron Technology faced a rough start, down 10%, और जिसकी वजह से क्योंकि न्यू गूगल का सॉफ्टवेयर that drastically reduces AI memory needs sparkling fears of a demand slowdown in high-end chips. क्योंकि गूगल काफी काम कर रहा है इस वक्त AI chips के ऊपर, जिसकी वजह से जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर है, जो कंपेटिटिव सॉफ्टवेयर है, वो उसको बीट नहीं कर पा रहे, and that's the reason you are seeing this surge right now. Surging payroll, March non-farm payroll came into 178,000, well above expectation, while this shows a strong economy. तो ये भी एक है कि पेरोल के नंबर जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग आए हैं. इवन दो अगर आपने न्यूज देखी हो तो Oracle ने अपने 30,000 एम्प्लॉयज निकाले हैं. Similarly, Amazon is working on something, and there are other companies who are in that line as well. Sector level breakdown को अगर देखें तो winners कौन रहे इस वीक में? Clinical, travel, airlines and consumer discretionary. Those are surged. क्योंकि oil dropped हुआ, cost relief हुई, growth expectation is going to be improved. हम देखेंगे ज़्यादा travel इस वक्त, और leisure and housing stocks led rally, and that's what we are going to see. टेक्नोलॉजी इस वक्त रीबाउंड मोड में है. स्ट्रॉन्ग रीबाउंड मिड वीक में रहा, ड्रिवन बाय रिस्क ऑन सेंटिमेंट एंड एआई सेमीकंडक्टर मोमेंटम. और यही मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको गूगल की एग्जांपल दे रहा था. एनवीडिया इज डूइंग द सेम थिंग, और जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी इज कमिंग बैक. टोरंटो मार्केट में क्या रहा, ये थी हमारी सारी डिस्कशन यूएस मार्केट की. टोरंटो मार्केट में जो बिग मूवर्स रहे हैं वो हैं गोल्ड एंड एल्यूमिनियम. गोल्ड रिमेन द प्रेफर्ड सेफ हेवन एट 4,700 per ounce, keeping miners like Agnico Eagle and Barrick in the green despite the broader market cooling. गोल्ड की प्राइस डायरेक्टली जो इम्पैक्ट करती है यूएस डॉलर की प्राइस से. अगर यूएस डॉलर की प्राइस कम होगी गोल्ड बढ़ेगा, अगर यूएस स्ट्रांग होगा गोल्ड डाउन होगा, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू सी. अब अगर सीज फायर हुआ है तो अगले 2 हफ्ते में हम ये देखेंगे कि इस वक्त यूएस डॉलर की जो प्राइस है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से गोल्ड थोड़ा सा वीकन होगा. दैट इज द टाइम टू परचेज गोल्ड. प्लीज कीप एन आई ऑन इट. फाइनेंशियल्स में क्या हुआ? बिग बैंक आरबीसी टीडी रिमेन फ्लैट बट स्टेबल. बैंक ऑफ कनाडा का होल्डिंग रेट जो 2.25% था, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर में जो एक कॉन्फिडेंस लेवल पैदा हो रहा है, क्योंकि एक और ऑन्टेरियो में उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ ऑन्टेरियो ने एक और डील दी है कि इफ यू आर बाइंग फ्रॉम अप्रैल 1st till March 31st 2027 एनी डेवलपमेंट और न्यू डेवलपमेंट की जो यूनिट अगर आप बाय करते हैं तो यू विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम HST, एंड दैट्स वेयर द मनी इज गेटिंग इनटू. अब वो कितना लोगों को फायदा देगा, दैट्स हम इंशाल्लाह 1-2 प्रोग्राम में हम किसी स्पेशलिस्ट को बुलाएंगे एंड विल स्टार्ट डिस्कसिंग विद देम एज वेल. Energy edged lower as a war premium, and crude oil evaporated. Crude is no longer the primary driver of TSX daily moves. Last week तक crude oil move कर रहा था, लेकिन अब जो है वो चीजें चेंज हो रही हैं. फाइनेंशियल सेक्टर आ गया और गोल्ड एंड एल्यूमिनियम एंड टेक सेक्टर इज कमिंग बैक टू. यहाँ पे कौन कौन से ड्राइवर रहे? सीज फायर बूस्टेड रिस्क एपिटाइट. ये सेम एग्जैक्टली हैपेंड इन द यूएस मार्केट एज वेल. और इसमें इन्वेस्टर्स रोटेटेड इनटू कंज्यूमर, इंडस्ट्रियल, टेक, और टीएसएक्स की रैली हुई है ब्रॉड बेस्ड, नॉट जस्ट एनर्जी, राइट. तो एनर्जी लास्ट वीक तक थी, लेकिन अब चीजें ब्रॉड होना शुरू हो गई हैं. ड्राइवर नंबर 2 क्या हुआ? ऑयल ड्रॉप्ड शार्पली, और जिसकी वजह से आफ्टर सीज फायर
और जिसकी वजह से एनर्जी सेक्टर फेल एट अराउंड 4.5%, और की डिफरेंस वर्सेस अर्लियर वीक, और जो हम पहले बात कर चुके हैं, ऑयल इज was helping TSX before, now it's temporarily hurting TSX, right? क्योंकि ऑयल TSX जो है वो ऊपर जा रहा था ऑयल की प्राइस की वजह से, but now it is hurting them. Driver number 3, commodity volatility. Materials are up 2.3%. Gold and metals losing momentum versus earlier safe haven demand. So that's what you're seeing. Winners कौन रहे इस पूरे सेक्टर में? Winners are strong sector driven by growth expectation. Lower oil equals to lower cost. Technology rebounded हुई 2.4% पे. Shopify is still volatile और high beta, big moves both ways. स्टॉक हाई लेवल कौन कौन से स्टॉक जो है इस वक्त हाई लेवल हाईलाइट्स रहे कनाडा के पॉइंट ऑफ व्यू से? अर्टिया दैट्स कंज्यूमर स्ट्रेंथ 9.5% ऊपर रहा. मैग्ना इंटरनेशनल 5.5% और ब्लैकबेरी अप बाय 10%. दूसरी साइड पे कैपिटल फ्लो, जो पैसा मूव हुआ एक सेक्टर या एक जगह से दूसरी जगह पे. एनर्जी और डिफेंस कमोडिटी ट्रेड से पैसा मूव हुआ है इनटू कंज्यूमर, टेक और इंडस्ट्रियल, और दैट्स हाउ बिकॉज मार्केट जो है वो रिबाउंड हो रही है वहां से. TSX as I mentioned earlier shifted from being oil supported to being growth driven this week, which is good. TSX के लिए बहुत अच्छी है ये चीज. ओके, कंपैरिजन हम क्विक करते हैं यूएस वर्सेस कनाडा की स्टॉक मार्केट में. मेन ड्राइवर सीज फायर की वजह से इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन जो है वो रही यूएस में, और सेक्टर रोटेशन टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज में रही. ऑयल इंपैक्ट पॉजिटिव रहा यूएस में, नेगेटिव रहा टीएसएक्स में. मार्केट टोन क्या रही यूएस में? रिलीफ रैली, उसके बाद कॉशियस, क्योंकि लोग जो है वो कॉशियस हो गए अब, लेकिन टीएसएक्स में स्ट्रॉन्ग रीबाउंड और अब स्टेबलाइजेशन मोड में जा रही है. लीडरशिप क्या रही यूएस में? टेक प्लस साइक्लिकल, और टीएसएक्स में कंज्यूमर प्लस इंडस्ट्रियल, और वीक सेक्टर दोनों के एनर्जी रहे. अच्छा, बिफोर वी गो हम जो है वो आपको गोल्ड प्राइस की मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इस वक्त गोल्ड प्राइस कहाँ है, और ये हम हर हफ्ते इसको मैं जो है वो अपडेट करता रहता हूँ आपके सामने. इस वक्त है 437.94. जो ये हमारा प्रोग्राम पहली दफा देख रहे हैं, ये टिकर है GLD. इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गोल्ड प्राइस. अगर गोल्ड प्राइस ऊपर होगी तो ये टिकर भी ऊपर होगा, और नीचे आएगी तो डेफिनेटली ये भी नीचे आएगा. दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट. तो अगर आप गोल्ड बाय नहीं कर सकते या आप जो है वो इन्वेस्ट नहीं कर सकते गोल्ड में, सो दिस इज एन ऑल्टरनेटिव फॉर यू टू लुक इनटू. उसके बाद हम देखते हैं इस वक्त ETF गोल्ड का. जो गोल्ड का ETF है विच इज XGD, और ये इस वक्त है, हाँ जी, XGD इस वक्त है $60.39 पे. ये ETF है. अगर आप बाय करना चाह रहे हैं तो इट्स अ गुड वन. इसका जो एक्सपेंस रेशियो है दैट्स 0.61%, और इसका एक साल का रिटर्न 118% है. क्योंकि गोल्ड प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हुई है पूरे साल लास्ट ईयर, so which is why you are seeing this number. So this was it folks. आज हमने डिस्कस किया ओवरऑल इंडस्ट्री की मार्केट, ओवरऑल सीज फायर के बाद क्या इम्पैक्ट आया है इस वक्त मार्केट में, और कैसे आगे चीजें चलेंगी. इंशाल्लाह एक दो वीक के अंदर आई विल ट्राई टू ब्रिंग समवन फ्रॉम द रियल एस्टेट मार्केट, क्योंकि हमें ये जानना है कि इस वक्त जो चीजें चेंज हो रही हैं मार्केट में, और मार्केट में जो कॉन्फिडेंस लेवल वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा, एंड हाउ थिंग्स आर गेटिंग इनटू द नॉर्मल शेप. जो मुझे आइडिया हो रहा है कि अगले 1-2 साल लगेंगे उसको जो है उस लेवल पे आने में, बट इज इट ट्रू, और इज देयर आर देयर एनी अदर things what government of Ontario is doing, which is going to help Ontario as well. Inshallah, I'll see you in the other episode next week, inshallah, and we'll try to bring someone for you. Assalamu alaikum. A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well for $2,500 or a hand pump for $800. Call 1-866-754-3111.
or visit mwcanada.org. Welcome to Icon Event Space, where every occasion becomes unforgettable. From weddings and corporate gatherings to birthdays, anniversaries, conferences, and cultural festivals, Icon is designed to host it all seamlessly. With room for up to 1,200 guests, our venue blends flexibility, sophistication, and scale, all tailored to your vision. Great location with ample free parking. Convenience is always part of the experience. Savor our premium catering, featuring South Asian, continental, and a world of international flavors, curated just for you. Call us today at 437-425-2500 or visit iconeventspace.com. अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है, तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। राहत बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसीन लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर, खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही ऑथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में, कुछ मीठा कुछ नमकीन। राहत बेकर्स, आज ही विजिट कीजिए 3920 Eglinton Avenue West, Unit 24, Mississauga. Call 905-820-1500 or visit rahatbakers.ca. रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ, मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464. Green Star Immigration Solutions Canada. Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals. At Alam Law Firm, our tireless efforts in the pursuit of justice for our clients include an unwavering belief. Beyond the courtroom battles, we forge meaningful connections with our clients. Supporting our local community is integral to the values we hold dear. Every single client file we represent at Alam Law bears my personal touch, a commitment that I stand by. For legal representation that will aggressively fight for your rights, contact Alam Law Firm today.
Injuries can change your life in an instant, whether they are caused by a motor vehicle collision, a serious slip and fall, a faulty product or service, or for any other reason. The result is the same. Your life has been dramatically changed, and for the worse. You need help, and you need someone to make things right. You need someone who will listen to you and respond to your unique needs. Most importantly, you need someone to protect your rights, to fight for you, and to ensure that you receive compensation that you deserve, so that you may have chance to eventually recover quality of life you once enjoyed. I know what it means to fight because I have fought for everything that I have. As an immigrant to this incredible nation, I faced my share of challenges. I went from being a young, successful executive in Pakistan to restarting my life and my career in Canada. But I have never backed down, and I have never given up. It is through this dedication to success that I have been able to achieve my dreams. At Alam Law, we believe that every individual deserves dedicated legal representation. It is not just about law. It is about standing up for what is right. We are dedicated to being your voice, your advocate, and your shield against the tactics of the insurance companies. Canada is the greatest country in the world, and its people are the greatest people in the world. That is why we at Alam Law have recently made a sizable donation to Trillium Foundation, because we believe in supporting Canadian healthcare and our local community. The people of Canada, including those who have been here for a long time and those who have recently joined the Canadian family, deserve dedicated and comprehensive legal representation. I am here to fight for you because I believe in you. At Alam Law, our distinguished team of experienced and highly qualified lawyers, paralegals, legal assistants, and support staff are here to fight for you. We have also built a referral network of some of the best medical professionals and specialists in Canada, because we understand that your recovery matters. We know the pain, the frustration, and the obstacle that you face, but together, we will overcome them. If you have been injured or you are facing any other legal challenges, don't wait another moment. Contact Alam Law and let us fight for you. Remember, justice is not just a word at Alam Law. Justice is what we deliver. We believe in the power of dedicated legal representation, and we won't bend down until we secure the just results you deserve. For legal representation that will tirelessly fight for you, contact Alam Law Firm today. With over 500 five-star reviews on Google, the results speak for themselves. Experience, integrity, personal attention. That is our commitment to you. At Alam Law Firm, we believe that the most important element of every file we work on is indeed the clients themselves, which has resulted in a proven track record of success. Our battle-tested litigation lawyers stand tall in the face of adversity and challenging cases. Our legal team comprises many legal professionals. Every individual deserves dedicated legal representation. For legal representation that will aggressively fight for your rights, contact Alam Law Firm today. अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है, तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Our certified technicians have years of experience, special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection, winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale.
We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050. Then let Talha Bhatti serve you the best. 647-295-7861. Reconstruction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. Talha Bhatti, 647-295-7861. Then let Talha Bhatti serve you the best. The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor at 647-838-477.